हेलो बंधुगण मो ना रोजी मु जेतेबेले +2 रे ना लेखेइली मो बयस 16 वर्ष थिला। मु कॉलेज पाखरे गोटे घर भड़ा नहीं रहिथिली। मो सह से भड़ा घरे आउ गोटे झियो भी रहुथिला। ता ना थिला रानी। नुआ नुआ जोबन रे पाद देइथिबारु आम दुई जनक पुदीरे प्रबल गलु हेउथिला। आमे आम दूध आउ पुदीर पूरा जत्न नेउथिले। आमे दूधरे नडिया तेल लगेई सबुबेले चिपुथिलु कारण बड़ दूध झियो मानंकु आकर्षणीय करे। सांग माने आजिर कहानी आमकु पठेइछंती सुरटरे काम करुथिबा राजू बेहेला। चलंतु आरंभ करिबा। हेलो बंधुगण मो ना रोजी मु जेतेबेले +2 रे ना लेखेइली मो बयस 16 वर्ष थिला। मु कॉलेज पाखरे गोटे घर भड़ा नहीं रहिथिली। मो सह से भड़ा घरे आउ गोटे झियो भी रहुथिला। ता ना थिला रानी। नुआ नुआ जोबन रे पाद देइथिबारु आम दुई जनक पुदीरे प्रबल गलु हेउथिला। आमे आम दूध आउ पुदीर पूरा जत्न नेउथिले। आमे दूधरे नडिया तेल लगेई सबुबेले चिपुथिलु कारण बड़ दूध झियो मानंकु आकर्षणीय करे। सांग माने आजिर कहानी आमकु पठेइछंती सुरटरे काम करुथिबा राजू बेहेरा। चलंतु आरंभ करिबा। मु झियो मानंक पाखरे बहुत लाजुआ थिली किंतु जेबेठारु मु जणे भाबींक प्रेमरे पड़िली सेबेठारु मु लाजुआ नुहंती। सेही भाबींक नाम अपराजिता एवं से झाड़खंडर रांची रुहंती। से बहुत सुंदर एवं सुस्थ थिले अर्थात से मोठारु टिके मोटा थिले। मु तांकु एक गीत गाइबा आपरे भेटिथिली। मु तांकु बहुत पसंद करिथिली। आमे कथाबार्ता आरंभ कलु। रातिरे घंटा घंटा धरी कथा हेउथिलु एवं तापरे आमे गिहा गेही विषय कथाबार्ता मध्य आरंभ कलु। मु मो जीवन रे केबे गेही नथिली। मु तांक सहित अनेक थर फोन रे गरम कथाबार्ता करिथिली किंतु आमे एपर्यंत केबे भेटी नथिलु। गोटिए दिन से मोते तांक ससुर घरकू तांकू भेटिबाकू निमंत्रण कले। मु बहुत भय करिथिली जे से मोते फसाई पारंती। तापरे मु शेषरे साहस करी गली। नवेम्बर मासर शेष सप्ताह थिला एवं बहुत ठंडा थिला। सेदिन से एक नील साड़ी पिंधिथिले एवं से बहुत सुंदर देखा जाउथिले। आउ ता दूध गुड़ा पूरा मस्त लागुथिला। तांकू देखि गेहिबाकू मोर बहुत इच्छा हेला। मु तांकू तळे पकाई तांको उपरे देई पड़िबाकू इच्छा कली किंतु तांको पिला माने सोई नथिले। किछि समय परे जेतेबेले तांको पिला माने सोई पड़िले आमे दुहे बेडरूम को जाई खेल करिबा आरंभ कलु। चुमा सहित से धीरे धीरे गरम हेबाकू लागिला। मने हेउथिला से मो अपेक्षा अधिक आग्रही थिला। मु धीरे धीरे मोर गोटिए हाथ तळकू घुंचाइली एवं तार छाती उपरे रखिली। धीरे धीरे दूध चिपी देली। ता पुदीरे आंगुठी पूरी मो देह पूरा सितेई गला। एहा ताकू आहुरी गरम करिदेला। आमर चुमा दियो देई जारी रहिला एवं आमे दुहे केबे आम ड्रेस खोली देलु ताहा आमे जानि पारिलु नाही। से मोर दंडाकू धरी आगकू पछकू हलेइबाकू लागिला। मु ताकू अटकाइली। भाबिली जदि हलेई देले माल बाहारी गला मजा गला। मु बहुत शीघ्र झड़िबाकू चाहू नथिली। तेणु मु प्रथमे तांको क्षीर पीबा एवं दांतरे तांको दूध मुंडी कामुड़िबा आरंभ कली। ता पुदी पूरा गोलापी रंगर। धनी घर लोक पुदी चाटी देले भी मजा लागिबो। जमा बाल नथिला पूरा सफा। से बहुत जंत्रणा अनुभव करुथिले एवं कहिबाकू लागिले प्रेम किछि कर। मु धीरे धीरे तांको पुदी पाखकू मो हाथ घुंचाइली आउ आंगुठी रे तेल मारी गेहिबा पई पुदी ढिला कली। तांको पुदी बहुत ओदा होई जाइथिला। से पूरा गरम हेई जाइथिले। आमे दुहे कुकुर पोजिशन रे गेही हेबाकू इच्छा कलु। से मोर दंडा चुसिबा आरंभ कले एवं मु तांको पुदी को चाटिबाकू लागिली। सेही मुहूर्तरे एपरी लागिला जेपरी आमे दुहे स्वर्गरे अछु। से कहिला मो स्वामी एपर्यंत मो पुदी चाटी नाहंती। आह्यू ओह चाट प्रेम आख भलरे चाट। से कामुक भाबरे बिलाप करी चलिला। तांकर कामुक बिलाप मते आहुरी उत्तेजित करिथिला। मु तांको पिचा चाटी चलिली। मोर जीभ संपूर्ण भाबरे भर्ती होईगला। किछि समय परे से गरम पानी बाहर कला। तेणु मु तांको पिचा रस चाटिली। तांको पुदी रस स्वादिष्ट भाबरे लुणिया एवं खट्टा थिला। एहा मोर प्रथम थर थिला जेतेबेले मु जणे भाउजंको पुदी रस चाटिथिली। एमिति फ्रेश मालकू गेही मते बहुत मजा लागिला। मो दंडा पूरा टेगेई जाइथिला। मु ता पाटीरे भरी ता मुंड धरी मो दंडा खुआइली। से एहाकू अत्यंत उपभोग करुथिले एवं से आह ओहु परी शब्द करुथिले। तापरे मोर आउ एक धारणा आसीथिला। मु एक बीपी सिनेमा रे देखिथिली जे बरफ व्यवहार करा जाए। मु तांको रोसेई घर को जाई फ्रिज रु एक बरफ क्यूब नेई तांको दूध मुंडी चारि पाखरे लगेई ताकू आहुरी हिट करिबा आरंभ कली। तांको जंत्रणा देखिबा योग्य थिला। झियो जेते चिल्लेई ताकू सेते मजा आसुथिबो।
जणे गरम महिलांक शरीर ठंडा बरफ क्यूब प्रकृतरे एक निशादायक अनुभव थिला। बहुत समय पर्यंत तांको उभय दूध मुंडी उपरे बरफ घुराइबा परे मोर मने पड़िला जे मु सेठारे डेरी मिल्क चॉकलेट रखा जाइथिबा देखिथिली। जेतेबेले मु जाइथिली मु देखिली जे एहा संपूर्ण तरली जाइथिबा चॉकलेट थिला। मु शीघ्र चॉकलेट चिरी तांको दूधरे लगाइबाकू लागिली। से कामुक आखिरे मोर गतिविधि देखुथिला एवं मो टेंग दंडा को देखि पुदीरे आंगुठी करुथिला। मु तांको अवशिष्ट चॉकलेट देइथिली एवं से मो दंडारे लगाइबाकू लागिला। मु तांको उभय दूध मुंडीरे मो जिभरे चाटिबाकू लागिली। से चॉकलेट एते उपभोग करुथिला जे से इस आ शब्द करुथिला। तापरे मु धीरे धीरे तळकू हली एवं तांको पुदीरे चॉकलेट लगाई मो जिभरे चाटिबाकू लागिली। से कहिले मोते मध्य तुमर दंडा चुसीबाकू दियो। मु मना कली। मु भय करुथिली जे जदि मो दंडारू माल बाहारी पड़े खेल सरी जीवो तेबे एहाकू चुचुमिबाकू समय लागिबो। सेतेबेले तांको पिलामाने उठी जिबे एवं सबु अव्यवस्था शेष होई जिवो। आउ सह्य करी न पारी से कहिले मोते तुमर दंडाकू चुचुमिबाकू दियो नचेत मो पुदीरे पकेई दियो। मु मध्य प्रथम थर पई पुदीरे गळाइबाकू जाउथिली। तेणु तांको परामर्श अनुसरण करी मु तांको पुदीरे मो दंडा भरी देली आउ ठेलिबाकू चेष्टा कली। किंतु मोर दंडा तेणु एहा भितरकू जाउथिला एवं मु टिके जंत्रणा अनुभव कली। तांको स्वामी पूर्वरु तांको पुदी चुचुमी सारिथिले तेणु से कोनोसी गुरुत्वपूर्ण जंत्रणा अनुभव करिनथिले। तापरे जेतेबेले मोर दंडा तांको पुदी प्रवेश करि पारिला नाही मु तांको तेल मागिली एवं तांको मो दंडारे लगाइबाकू कहिली। से मो दंडारे तेल लगाई तांको गोड़ मेलेई करी बिछणारे सोई पड़िले। से तांको हाथ साहाଯ୍ୟରେ तांको पुदी मेलाई कहिले एबे जल्दी भर प्लीज। मु पुणी तांको गात उपरे मोर साप रखिली एवं एहाकू प्रवेश करिबाकू चेष्टा कली। एथर साप ता गतकू साप की भितरे खसीगला। एपरी लागिला जेपरी मु मोर सापकू एक चुली रे प्रवेश कराइथिली। पूरा गरम लागिला। से विलाप करिबाकू लागिले एवं उपभोग करिबाकू लागिले। मु तांको धीरे धीरे गेहिबाकू लागिली। मते आहुरी जोर रे गेहि दियो। आहुरी जोर रे मु मोर गति बढ़ाई देली। अति कमरे 10 मिनिट गेहिबा परे मु किछि अजब अनुभव करिबाकू लागिली। मु बोध हुए गेहिबाकू जाउथिली। मु तांको कहिली मु गेहिबाकू जाउछि। मु केउठारे गेहिबा उचित। से कहिले मो पुदी गेहि मेलेई दे। मु बहुत दिन धरी गिहा खाइनी। मु ता गोलापी पुदी देखिकी पूरा बावळा हेउथिली केहि चालिली। 20 मिनिट परे मु हालिया हेई पानी ता नुनुरे छाड़ी देली। से किंतु शांत हेई नथिला। तापरे आमे दुहे किछि समय पई विश्राम नेलु। किछि समय परे से पुणी थरे मो सापकू चिपी चिपी उठेला। एहा मोर सापकू पुणी खिया कराइला। आमे पुणी थरे खेल आरंभ कलु। आमे सेही राती रे 3 थर खेल कलु। एही परी सेही भाबी मते घरकू डाकी दियंती। Digital investment represents the comprehensive ecosystem through which capital is allocated to managed within and derived from digital assets, platforms, and technologies. It is not merely the digitization of traditional investment processes like online brokerage, but a fundamental paradigm shift in both constitutes an asset although each created and exchanged and can participate in global financial markets. At its core, digital investment leverages blockchain technology. This analysis will deconstruct digital investment across its constituent parts, the assets themselves, cryptocurrencies, tokenised securities, the platforms and mechanisms that enable investment DeFi, SeFi, OS, the underlying technological infrastructure, the evolving regulatory landscape, and the profound socio-economic implications of this ongoing financial revolution. Investment in ETH thus becomes a bet on the utility and adoption of its ecosystem. Thousands of alternative altcoins exist, ranging from payment-focused Litecoin to privacy-oriented Monero and platform-specific Solana, Cardano, each with unique technological and economic models. Tokenized securities security token offerings as these bridges traditional finance therapy with digital investment. Here, real-world assets like equity, debt, real estate. These are not mere digital receipts. They are the legal ownership itself recorded on an immutable ledger. OS promise immense benefits 24/7 global trading, fractional ownership allowing investment in a fraction of a commercial building, automated compliance बाधा, programmable rules,
and reduced intermediation costs. They represent the digitization of the very fabric of capital markets. Non-fungible tokens TSTs are unique, verifiable digital certificates of ownership and authenticity for a specific asset linked to a blockchain. Initially popular for digital art and collectibles, e.g. CryptoPunks, Bored Ape, Photo Club, their utility extends to intellectual property. Madhurika royalties, event tickets, in-game assets, and real-world asset provenance luxury goods. This investment in TIS is a speculative on cultural value, utility within virtual ecosystems, or of future reve, central bank digital currencies SIS, while not a direct private investment vehicle. SIS represent a state-sanctioned digital asset that will fundamentally reshape the monetary system. Issued and regulated by central banks, SIS are the digital form of fiat currency, where the line retail os wholesale degree of anonymity will influence liquidity, monetary policy transmission, and potentially create new digital investment instruments as the foundational layer of future finance digital. This encompasses virtual land parcels in platforms like Decentraland or the Sandbox, avatars, wearables, and tools within immersive digital environments. These assets are typically TIS, where value is derived from their location, utility, and the economic activity within their virtual context, representing a speculative bet on the growth and adoption of the metaverse as a new frontier for social interaction, commerce, and entertainment. Centralized finance SEFI this mirrors traditional finance but for digital assets. Companies like Coinbase, Binance, and Kraken act as custodial exchanges, holding users' assets and facilitating trading, lending, and borrowing. They offer user-friendly interfaces, customer support, and often function rates on ramps from fiat currency. Investment baja SEFI involves trusting a third party, sacrificing some decentralization for decentralized finance. DeFi this is the radical open source alternative. DeFi protocols are software stacks running on blockchains, primarily Ethereum, that reflect and invest upon financial services, lending, borrowing, trading, derivatives, insurance without intermediaries. Users interact directly with a smart contract thus using self-custody wallets, e.g. MetaMask. Key mechanisms include decentralized exchanges like Uniswap or SushiSwap. Those automated market makers aims in decentralized exchanges like Uniswap or SushiSwap. Those automated market makers aims and liquidity pools, where users provide asset pairs to facilitate trades and earn fees. Lending borrowing protocols like Array or Compound allow users to lend assets to earn interest or borrow against their crypto holdings as collateral. Yield farming and liquidity mining incentive mechanisms where users provide liquidity to protocols in return for token rewards often. Yield farming and liquidity mining incentive mechanisms where users provide liquidity to protocols in return for token rewards, often generating IBOT risky deals. Staking participants loco of certain cryptocurrencies, e.g. ETH in Ethereum 2.02L secure the network and validate transactions, earning rewards in return. DeFi investment is characterized by self-sovereignty, transparency, all code and transactions are public composability. Staking participants loco of certain cryptocurrencies, e.g. ETH in Ethereum 2.02L secure the network and validate transactions, earning rewards in return. DeFi investment is characterized by self-sovereignty, transparency, all code and transactions are public composability, the ability to combine different protocols like money legos, and significant technical and smart contract risk. Blockchain technology the immutable distributed ledger is the non-negotiable bedrock. Its attributes decentralization, transparency, security,
and programmability, enable trustless transactions and the creation of novel assets. The evolution from energy-intensive proof of work Bitcoin to more efficient proof of stake Ethereum, Cardano and other consensus mechanisms is crucial for scalability and environmental sustainability, directly impacting investment viability. Custody and wallet security of digital assets is paramount. Solutions range from hot wallet software-based connected to the internet for convenience to cold wallets hardware devices storing keys offline for maximum security and institutional-grade custodial services. The phase notable keys Motor crypto underscores the philosophical and practical divide between self-custody and third-party custody. The United States collectively by enforcement actions and of regulation by enforcement approach. With the SEC classifying many tokens as securities and the CFTC forcing crypto derivatives, clarity is emerging slowly through legislation and court rulings. The European Union taking a proactive comprehensive approach with the markets in crypto assets MiCA regulation, aiming to create a harmonized framework for the EU. Asia a IVERS patchwork with strict Asia a IVERS patchwork with strict prohibitions in China, progressive licensing regimes in Singapore and Hong Kong, and evolving frameworks in Japan and South Korea. Regulation impacts everything from token issuance OS, exchange operations, KYC, AML requirements, taxation, and investor protection. Clear, sensible regulation is seen as essential for mainstream institutional adoption. Part IV risk architecture and challenges. Market volatility, extreme price swings are commonplace, driven by speculation, sentiment, macroeconomic factors, and influencer commentary. Technological risk, smart contract vulnerabilities led to hundreds of millions in losses from XM exploits. Protocol failures and blockchain network congestion are real threats. Custodial risk, exchange failures, Mt. Gox, FTX, Hex, and fraudulent schemes resulted in catastrophic losses. The irreversibility of blockchain transactions, financial inclusion by providing access to global capital markets with only an internet connection and a smartphone. Digital investment can potentially bank the unbanked populations in developing economies. Democratization of finance, DeFi, and also barriers to entry for investment in entrepreneurial funding, challenging the gatekeeping role of traditional banks and venture capital firms. The future convergence of the trajectory points towards a hybrid financial system. We will likely see interoperability between LADFI, SEFI, and DeFi, tokenized real-world assets will trade on regulated blockchain-based exchanges. CSPL interact with DeFi protocols under NADU regulatory frameworks. DeFi with KYC identity baza decentralized identifiers or this will become integrated with investment activity for compliance and personalized services. Digital investment is not a passing fad but a fundamental evolution in the architecture of finance and the representation of wealth. It is the manifestation of a world where core, community, and capital intersect on open global networks, while currently characterized by innovation, speculation, and volatility. Its underlying technologies, blockchain, tokenization, and smart contracts are proving to be generational innovations with the potential to increase efficiency, transparency. The next billion users and building a robust bridges between the legacy financial world and this new digital frontier. For the investor, digital investment demands on the literacy and understanding of technology, community dynamics, and a high risk tolerance. For society, it promises a reimagining of ownership, investment, and the way flow of capital in an
increasingly digital world, the transformation is already underway. Its full integration into the global economic fabric is now a question of. It promises a reimagining of ownership, investment, and the pay flow of capital in an increasingly digital world. The transformation is already underway. Its full integration into the global economic fabric is now a question of when.